Hello students, now let us understand what are azeotropes. Before this, in this chapter of solution, we studied ideal and non-ideal solutions in our last lesson. Two types of non-ideal solutions, and today azeotropes. You can also say azeotropic mixtures. So what are azeotropic mixtures? There are two types that will be studied in this topic. First of all, the concept of azeotropes is applicable to binary solutions having fixed composition. What does it mean? First, binary solution होना चाहिए. That solution which has one solvent and one solute. That is a binary solution. We have a binary solution. उसमें solvent and solute both are liquids, और solvent and solute both have a fixed composition in that binary solution. So a binary solution having fixed composition, for that binary solution, the concept of azeotrope is applicable. Now, what is azeotrope? A binary solution having fixed composition in which both solvent and solute boils at a constant temperature. That binary solution is called as azeotrope. तो क्या कहा हमने स्टूडेंट आपसे? हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है. सेकंड पॉइंट, दैट बाइनरी सॉल्यूशन मस्ट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ solute and solvent. Then that binary solution at that fixed concentration boils at a constant temperature. So that binary solution which boils at a constant temperature at a fixed concentration, that is called as azeotropic mixture. क्या मीनिंग है इस सभी का? इसको कुछ और तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. टेक प्योर सॉल्वेंट. It will have its own boiling point. On the other hand, take pure solute. It will have its own different boiling point. We will mix solvent solute with each other at a fixed composition and we will obtain a binary solution. Then we will see that this binary solution at the fixed composition boils at a constant temperature. So that kind of binary solution in which both solvent and solute boils at a constant temperature at a fixed concentration, that is called as azeotrope. तो होप करता हूं डेफिनेशन आप अंडरस्टैंड किए होंगे. सॉल्यूशन बनाने से पहले सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट थे. जब हमने उन दोनों को मिक्स किया, बाइनरी सॉल्यूशन बनाया, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन एक फिक्स कंपोजिशन पे क्या करता है? सेम टेम्परेचर पे बॉयल करता है. मीनिंग
बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों के दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं एट अ पर्टिकुलर एट अ फिक्स्ड कंसंट्रेशन. दैट काइंड ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज azeotrope or azeotropic mixture. Let's read some points from the board. तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, azeotropes, as I said, they are formed in case of binary solutions having fixed composition. Fixed composition of solvent and solute आगे डिस्कस करने वाले हैं. Very important here, binary solution which boils at a constant temperature and at a fixed composition, that is actually called as azeotrope. So that binary solution in which both solvent and solute boils at a constant temperature at fixed composition, that is called as, yes, that is called as azeotrope. अब बहुत इंपॉर्टेंट हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. एक्चुअली जो azeotrope है, दैट बाइनरी सोल्यूशन विच इज बीइंग कॉल्ड एज azeotrope, ऐसे बाइनरी सोल्यूशन में अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. आई रिपीट माई सेंटेंस. बच्चों ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा. एजियोट्रॉप के जो टू कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनको बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते. थोड़ा सा पहले स्टडी करना पड़ेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर में वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर है. इथेनॉल एंड वाटर. इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 353 केल्विन है एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन. और हमें इस मिक्सचर को एक दूसरे से सेपरेट करना है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड. मैं इस मिक्सचर को हीट करूंगा, मिक्सचर के टेम्परेचर को मैं रेज करूंगा और स्टूडेंट्स फर्स्ट 353 केल्विन टेम्परेचर विल बी रीच्ड. जैसे ही अपरेटस 353 केल्विन टेम्परेचर एक्वायर करेगा, इथेनॉल वेपर्स में चेंज होगा. हम इथेनॉल के वेपर्स को अदर कंटेनर में कलेक्ट करेंगे, कंडेंस करेंगे और हम इथेनॉल को वापस ऑब्टेन कर लेंगे. इस तरह सेकंड कंटेनर में कॉल्ड कंडेंसर हमने इथेनॉल ऑब्टेन कर लिया, फर्स्ट कंटेनर में वाटर रह गया. दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इफ वी हैव टू लिक्विड्स which are mixed with each other in a solution, the liquids have different boiling points. liquids के boiling points में sufficient difference भी हो तो हम उन liquids को एक दूसरे से separate कर सकते हैं by the method of fractional distillation. But in case of azeotrope, fractional distillation use करके हम बाइनरी सोल्यूशन के सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते. तो फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट हो गया एजियोट्रॉप का? द कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉप कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब हम ये स्टडी करेंगे कि एजियोट्रॉप के जो कंपोनेंट हैं, बाइनरी सोल्यूशन के ये जो कंपोनेंट हैं, बाइनरी सोल्यूशन एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे एजियोट्रॉप एक्ट कर रहा है. इस बाइनरी सोल्यूशन के दो कंपोनेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, हम इनको क्यों सेपरेट नहीं कर सकते? बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन.
तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। क्यों सेपरेट नहीं हो सकते सॉल्वेंट सॉल्यूट एजियोट्रॉप में बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, रिपीट करता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज becomes equal to mole fraction of the solvent in the vapor phase. क्या कुछ आइडिया लगा? मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का लिक्विड फेज में इक्वल हो जाता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द वेपर फेज। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का इन द लिक्विड फेज becomes equal to mole fraction of the solute in the vapor phase. As a result of that, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का लिक्विड फेज है, वेपर फेज इक्वल हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द लिक्विड एंड वेपर फेज, ये भी इक्वल हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है बाइनरी सॉल्यूशन में एजोट्रॉप के ये जो दो कंपोनेंट हैं, हम इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, दे कैन बी सेपरेटेड बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ क्लास 12th। हायर स्टडीज में कहीं पढ़ेंगे आप। तो एक बार फिर से बोर्ड पे देखिएगा, हमने क्या आपको बताया। तो स्टूडेंट यहां देखिएगा हम क्या बात कर रहे थे आपसे, solvent and solute cannot be separated by fractional distillation. Why? मैंने लिखा है बोर्ड पे because, यहां ध्यान दीजिए, mole fraction of solvent in liquid phase. I repeat, mole fraction of solvent in liquid phase becomes equal to mole fraction of solvent in vapor phase, and at the same time यहां लिखा also mole fraction of solute in the liquid phase become equal to mole fraction of solute in the vapor phase, and as a result of that azeotrope के two components solvent and solute cannot be separated by the fractional distillation, and this is one of the most important points of azeotrope. So before going to the two types of azeotropic mixture, let's recapitulate what are azeotropes. Very important, student, I say. Azeotropes are the binary solutions which at a fixed composition boil at a constant temperature. In simple words, azeotrope is a binary solution in which both solvent and solute boils at a same temperature at a fixed composition. The components of azeotrope cannot be separated by fractional distillation because mole fraction of solvent in liquid phase becomes equal to mole fraction of solvent in vapor phase, and at the same time mole fraction of solute in liquid phase becomes equal to mole fraction of solute in the vapor phase. So students, these are azeotropes. Now let us understand two types of azeotropes, very important, and the concept is related to non-ideal solutions. Minimum boiling azeotropes, I repeat students, minimum boiling azeotropes and maximum boiling azeotropes. I say there are two types of azeotropes, which are number one, minimum boiling azeotrope, and number two, maximum boiling azeotrope. So let us first understand minimum boiling
azeotrope. So student, I am going to take this minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope in my next lecture. Thank you.